Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine and better by the grace of Allah. Welcome to the Montessori Complex High School Distance Learning Program. My name is Miss Uzma Zaidi. This is my 13th video. In this video, I will start lesson 4 question answers in science copy. These are rules for doing work. Kindly follow that. Kindly maintain book and copy. Don't tear the page of book and copy. Cover your book and copy with plastic cover. Kindly do the work neat and clean. Your writing should be clear. Listen and follow the directions. Okay? This is your science copy. This is your science copy page pattern. One page is interleaf and second page for line page. This is your index. Maintain the index page. Put the date when you will start the science copy work as shown in this picture. Now turn the page and make a beautiful title page. Lesson 4 Solids, Liquids and Gases as shown in this picture. Now students, open science book and come to the page number 29. These are questions. So let's start the work. Blue color pencil will use for write the question and pencil will use for write the answer. This is question number 1. Name the 3 states of water. पानी की 3 states यानी हालतों के नाम. Answer: ice, water and steam are the 3 states of water. बर्फ, पानी और भाप पानी की 3 states हैं. Okay? Look at the picture. Draw or paste the picture of interleaf page in science copy. This is question number 2. Name 3 solids which are used in buildings. 3 solids यानी ठोस के नाम जो इमारतों में इस्तेमाल होते हैं. Answer: The 3 solids are bricks, stones and wood which are used in buildings. 3 solids ईंटों, पत्थरों और लकड़ी हैं जो इमारतों में इस्तेमाल होते हैं. ओके? Look at the picture. Draw or paste the picture on interleaf page in science copy. This is
Question number 3. What are the characteristics of a liquid? लिक्विड्स की खसूसियात क्या हैं? आंसर: liquids flow and do not have a definite shape. Liquids always flow from higher level to lower level. लिक्विड्स फ्लो करता है यानी रवानी होती है और इसकी कोई डेफिनेट शक्ल नहीं होती है. लिक्विड्स हमेशा हायर सतह से लोअर सतह तक फ्लो करता है. ओके. लुक एट द पिक्चर. ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑन इंटरलीफ पेज इन साइंस कॉपी. This is question number 4. Name 3 materials which do not have a definite shape. 3 materials के नाम जिनकी डेफिनेट शक्ल नहीं होती. आंसर: The 3 materials are water, milk and oil which do not have a डेफिनेट शेप. 3 मटेरियल्स पानी, दूध और तेल हैं जिनकी डेफिनेट शक्ल नहीं है. ओके. लुक एट द पिक्चर. ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑन इंटरलीफ पेज इन साइंस कॉपी. दिस इज Question number 5. Name the gaseous state of water. पानी की गैसियस हालत के नाम. आंसर: The gaseous state of water is steam or water vapor. पानी की गैसियस हालत भाप या वाटर वेपर है. Look at the picture. Draw or paste the picture on interleaf page in science copy. This is question number 6. What do you understand by change of state of materials? Materials की हालत में तब्दीली का जरिया आप क्या समझते हैं? आंसर: The state of materials can be changed from one to another by heating or cooling. मटेरियल्स की हालत हरारत या ठंडा करके एक से दूसरे में तब्दील की जा सकती है. ओके. Look at the picture. Change of states by heating or cooling. Draw or paste the picture on interleaf page in science copy. This is question number 7. Name a material that needs a lot of heat to change from solid state to liquid state. मटेरियल्स का नाम जिनको सॉलिड हालत से लिक्विड हालत में तब्दील होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. आंसर: मेटल लाइक गोल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ हीट टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. सोने की तरह धातु को सॉलिड हालत से लिक्विड हालत में तब्दील होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. ओके. Look at the picture. Draw or paste the picture on interleaf page in science copy.
This is your homework. Learn all questions answers of lesson 4 from science copy. My 14th video will come soon. In my 14th video, I will start lesson 4 all book exercises from science book. Take care. Allah Hafiz. Good luck, student.